PW आपको इंस्टॉल करेंगे एंड देन यू हैव टू एनरोल नीति बैच, और नीति बैच में आपको ये सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, एज वेल एज ये PDF मिलेगी फॉलोड बाय योर DPP। प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या होता है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक क्या होता है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है। अगर बोर्ड के ऊपर चेयरमैन का साइन है एंड इंस्ट्रूमेंट पे मेंबर सेक्रेटरी का साइन है, we will presume that this order or instrument is authenticated. There will be no question that it is fake or forged. All the decisions और all the regulations related to your board, चाहे उसकी मीटिंग हो गई, प्लेस हो गया है, कोरम हो गया है या टाइम हो गया है, that will be decided by Central Government. Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल, जहां पे आज फिर से हम डील कर रहे हैं एक important newly added minor law into your UP PCSJ preliminary subject, preliminary examination, और ये सब्जेक्ट है हमारा PCPNDT Act. PCPNDT Act जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही ज्यादा ये सब्जेक्ट टेक्निकल है, लेकिन इस सब्जेक्ट को डील करने से पहले I would like to inform you that while we will be studying this subject, we have to ensure that we study this subject in two aspects. The first thing that you get into your mind is that, ma'am, whenever we study this act, we realize that many of the terms belongs to the medical field. Medical field के terms हैं और हमारा उन terms से कुछ खास लेन देन है नहीं, and it becomes very difficult for us to understand such terms. Then in that case, what we should do? Then in that case, we will first deal with all the medical terminologies, that is definition, and try to simplify the definitions into our legal language, and then connect it to the provisions, then connect it to the legal provisions that are in this act. So without wasting any time, let's begin with PCPNDT Act. Now students, if you go through the name of this act, which is Preconception and Pre-Natal Diagnostic Technique Act 1994. There are two words where you need to focus. First is preconception and second is prenatal. What is meant by preconception? Preconception की अगर मैं बात करूं, it means before conceiving. Conceiving what? Before pregnancy. Before pregnancy, there are certain things which are prohibited under this act. And prenatal means what? Prenatal means the time during which women is pregnant. That is, once she has conceived the pregnancy, after that time period, जितने भी period में that embryo, that fetus or that conceptus develops, that is your prenatal time duration. And diagnostic means to treat. That is the treatment. Now, to understand this act, we will first understand all the definitions. That is, the definitions related to the child that is taking place or the birth of the child. Second is some of the institutions. Third is some of the special people or some of the special designations that are added into this act. So as I have always said कि कोई भी minor law शुरू करने से पहले it is important that you focus on the important dates that are given under this act. अब जब इस act की बात करेंगे students, तो एक major amendment हुआ था in 2003 and President's assent was received to this act on 20th September 1994, and this act came into force on 1st January 1996. 2003 का amendment कब effect में आया था? 14 February 2003, and number of chapter are 8 and number of sections are 34. Now, one more thing, once we finish the rapid revision of this session, this will be followed by a small practice session, and उसके बाद you can get this PDF. Since you all are seeing this recorded video, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस क्लास की PDF आपको मिलने वाली है कहां पर? आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखा हुआ, एक लिंक लगा हुआ मिलेगा. यू हैव टू क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू विल बी राउटेड टुवर्ड्स द PW ऐप. PW ऐप को इंस्टॉल करेंगे एंड देन यू हैव टू एनरोल नीति बैच, और नीति बैच में आपको ये सारे सेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, एज वेल एज ये PDF मिलेगी फॉलोड बाय योर DPP. हर सेशन YouTube पे ओवर होने के बाद देयर इज अ डेली प्रैक्टिस सेशन. तो इस ऐप के कुछ और MCQs आपको ऐप में मिलने वाले हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स के फॉर्मेट में. सो नाउ लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशंस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है 2BA, दैट इज कंसेप्टस. फिर है हमारे पास एम्ब्रियो एंड थर्ड है हमारे पास फीटस. व्हाट इज मेंट बाय कंसेप्टस? अगर कंसेप्टस का मैं लिटरल मीनिंग आपको बताऊं स्टूडेंट्स, इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन. ये स्टेज तब आती है जब
a woman conceives pregnancy. After conceiving the pregnancy, that is from the date of fertilization to the date of the birth, that is complete 9 months procedure, or the product that is developing in the 9 months means conceptus. As well as it includes extra embryogenic membrane, embryo or fetus. This is the membrane which protects the baby, बच्चे को protect करता है. Second is embryo and third is fetus. So what is embryo? When we were in 8-9 standard, that is the time when we studied about human reproduction, and there we studied about embryo and fetus. लेकिन वहां पे टाइम ड्यूरेशन के बारे में स्टूडेंट्स हमें इतना नहीं बताया गया था जितना कि ये एक्ट हमें क्लियरली बताता है. सो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज योर भ्रूण. हिंदी में इसको बोले तो वो होता है भ्रूण. इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म. दोनों ही केसेस में, बी इट द केस ऑफ एम्ब्रियो और बी इट द केस ऑफ फीटस, दोनों में ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ड्यूरेशन और द लेंथ. यहां पे एम्ब्रियो का टाइम ड्यूरेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन टू 8th वीक, दैट इज 56 days, and after 56th day, that is from 57th day till birth, what develops inside a mother's stomach or uterus is the fetus. So understood? Embryo का time duration होता है after fertilization to 56th day, and from 57th day to the time duration, to the time period till the baby takes birth, it is said to be as fetus, which is given under BC. 2BC. These are the 3 definitions we have discussed. Another slide contains the definitions जो कि deal करती है आपके कुछ specific institutions से related. इस act में हम उन institutions का definition पढ़ेंगे, उन institutions का regulation कौन करता है, who makes the rules and regulations, for what or what acts by these institutions are prohibited, when these institutions can be registered or whether their registration can be cancelled or suspended or not, and what are the acts they can perform and which acts are prohibited by them. This is the major point that we need to focus, और यहां से PCPNDT से आपके पास सवाल आते हैं. So the first definition regarding these institution belongs to genetic counseling center. As the word itself suggests, the word counseling. Counseling का मतलब बच्चों क्या होते हैं? परामर्श करना. That means there are some people, or you are talking to some person and solving their problem. So this is a center, and this center can include either institute, hospital or nursing home which provides genetic counseling to patients. We have seen there are couples who are childless, जिनको बच्चे नहीं हैं. Then what do? They go to such genetic counseling centers to find out the way by which they can conceive baby. Okay, so they do the counseling. 2D deals with genetic clinic. Clinic का काम क्या होता है? Obviously to give the treatment or for conducting any of the treatment. So conducting or prescribing any treatment to the patient. So this clinic also includes institution, hospital or nursing home. But what is their purpose? They are used for conducting prenatal diagnostic procedure. Pre-natal diagnostic procedure, I have already explained you कि pre-natal का मतलब क्या होता है. Pre-natal का मतलब होता है कि जब प्रेग्नेंट हो चुकी है फीमेल एंड उसके बाद जब तक बच्चे का बर्थ नहीं होता तब तक का वो टाइम ड्यूरेशन जो होता है, दैट मीन्स प्री-natal. दैट इज द टाइम ड्यूरेशन दैट अ वुमन गोज थ्रू बिफोर द birth of the child. It also includes any vehicle having an ultrasound and image machine for sex determination. इसमें हर वो व्हीकल आएगा जिसमें आपकी अल्ट्रासाउंड की ऐसी कोई मशीन है जिससे कि सेक्स डिटरमाइन किया जा सकता है. सेक्स डिटरमाइन मीन्स दैट the machine can let you know whether the child in mother's uterus is a girl child or a boy child, that is a male child or a female child. Third definition is genetic laboratory. So you see, counseling center हो गया, clinic हो गया and laboratory हो गया. मतलब कोई ना कोई ये जगह है. These are the places. So places के basis पे मैंने इस एक्ट की 3 definitions को एक ही चार्ट में कवर किया है. 2E says what is a genetic laboratory? Whenever you get ill, कोई बीमारी हुई, हम डॉक्टर के पास जाते हैं. What does doctor do? They give us a test receipt कि जाइए टेस्ट करवा के आइए. And then where do you go? You go to the laboratory. तो laboratory में क्या होगा बच्चों?
टेस्ट होगा, लेकिन लेकिन उस टेस्ट के लिए भेजेगा कौन? इट इज अ प्लेस प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर कंडक्टिंग टेस्ट ऑफ द सैंपल्स. कैसे सैंपल्स? विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द जेनेटिक क्लिनिक फॉर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट. पहले ये समझो कि व्हाट इज प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट. सी स्टूडेंट्स, एक पिक्चर बनाते, एक स्टोरी समझते हैं. ओके, लेट मी क्रिएट अ स्टोरी फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन गेट्स प्रेग्नेंट. Okay, we have generally seen pregnant women going to the doctor for what? To get treatment to ensure that she does not suffer any complication, she does not suffer any abnormalities, neither her baby suffers any abnormalities. Perfect. For that reason and to ensure that she goes through a healthy pregnancy, she goes to the doctor. तो डॉक्टर उस प्रेगनेंसी का इंश्योर करने के लिए कि दैट प्रेगनेंसी इज फ्री फ्रॉम एनी एबनॉर्मलिटीज, फ्री फ्रॉम एनी प्रॉब्लम, then to detect whether the pregnancy or the child inside the uterus is fit and fine or not, क्या किया जाता है? प्रीनेटल डायग्नोस किया जाता है. प्रीनेटल मींस बिफोर बर्थ वाला ट्रीटमेंट. किसका बर्थ? चाइल्ड का बर्थ. तो बिफोर चाइल्ड के बर्थ का जो डायग्नोसिस होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, उसको हम कहते हैं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, ट्रीटमेंट, प्रोसीजर. नाउ वी हैव थ्री काइंड ऑफ स्पेशल पीपल. सो इस चार्ट को हम नाम दे सकते हैं थ्री काइंड ऑफ स्पेशल पीपल. फर्स्ट पर्सन वी हैव इज गायनेकोलॉजिस्ट, जिसे स्त्री रोग विशेषज्ञ कहा जाता है. गायनेकोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु पोजेसेस पीजी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन गायनेकोलॉजी और obstetrics. What is gynecology? It is a subject related to the pregnancy or the training or how to deal with the any patient who comes with the pregnancy issues or for the treatment of the pregnancy. Okay. Second is obstetrics. This is a detailed study or a subject in your medical field जहां पे ये बताया जाता है that how to take care of pregnant women before conceiving or after conceiving, that is throughout the time period of pregnancy, and the third is after the baby comes on the earth or takes birth. तो 3 स्टेजेस में इस बच्चे का या उस बच्चे की मां का आपको ध्यान कैसे रखना है, ये पूरी स्टडी होती है ऑब्स्टेट्रिक्स पे. ओके, सो ऐसा पर्सन हु हैज क्वालिफिकेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन बोथ द सब्जेक्ट गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स, he is or she is known as gynecologist. So another definition that is before us is 2G, which says medical geneticist. कौन होता है? Medical geneticist कौन होता है students? First point that you need to understand is that here this is your division. Any person who is either having diploma or degree in genetic science, इन जेनेटिक साइंस, और जेनेटिक साइंस के भी कौन से सब्जेक्ट्स हैं आगे? जेनेटिक साइंस इन सेक्स सिलेक्शन प्लस प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. इफ ही हैज सच डिप्लोमा और डिग्री इन both of these two fields, then in that case we will say that you are a medical geneticist. But if he has experience in genetic science, not degree or diploma, mere experience, that is 2 years experience in genetic science after having medical qualification under Indian Medical Council Act 1956 or after completing his post graduation degree in biological science. Did you get this point? Medical geneticist कौन होगा बच्चों? ऐसा पर्सन जिसके पास या तो डिप्लोमा है या डिग्री है, किसमें? जेनेटिक साइंस में, या फिर उसके पास एक्सपीरियंस है कम से कम 2 साल का इन जेनेटिक साइंस. If he has diploma or degree in genetic science, then in this case, further in genetic science, what should have been his subject? Either sex selection plus, not either, sex selection plus prenatal diagnostic technique should be his field. And if he does not possess degree or diploma, then he should have experience. मात्र ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, किसमें? जेनेटिक साइंस में. और वो भी 2 साल का एक्सपीरियंस कब ले सकता है वो? आफ्टर ही इज क्वालिफाइड अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 और आफ्टर ही हैज ऑब्टेन्ड पीजी डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंस. सो दोनों ही केसेस में व्हाट इज इंपॉर्टेंट? जेनेटिक साइंस दोनों में इंपॉर्टेंट है.
इस फील्ड में उसके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एंड इस आपके पार्ट में उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 2 साल का आफ्टर आइदर ऑफ दीज 2 qualifications. Is it clear that who is a medical geneticist? Okay, in case if you are having any doubt, since you are seeing recorded class, you can put your doubt into the comment section. H point is pediatrician. Who is a pediatrician? बाल चिकित्सक, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए जो मीठी मीठी दवाइयां लिखते हैं, जिनको खिलाते हैं, वो होते हैं आपके pediatrician. Who possess a PG qualification in pediatrics. This is also a subject in medical science. And now we have important topics जहां पर हम डिस्कस करेंगे that prenatal diagnostic procedure क्या होता है, prenatal diagnostic technique क्या होता है, prenatal diagnostic test क्या होता है. These 3 words, that is procedure, technique and test. ये सारे शब्दों को हमें अच्छे से समझना है. 2I says prenatal diagnostic procedure है मतलब कोई प्रक्रिया है, कोई एक प्रोसेस है where your gynecologist, obstetrical or medical practitioner, what do? They follow a procedure. अब इस प्रोसीजर में क्या क्या चीजें हो सकती है, what all things are included under this procedure? So your gynecologist, obstetrical or any medical practitioner could have opted any of these procedure which includes ultrasound, sonography जिसे कहते हैं, fetuscopy, that is fetus का क्या हाल है, fetus के बारे में जानने के लिए, taking or removing samples of chronic villi, embryo blood, tissues और fluids. अगर प्रेग्नेंट women में कोई ऐसा टेस्ट करना है तो वो फ्लूइड्स ले सकते हैं, उसके कोई टिश्यूज ले सकते हैं, जो उस फीमेल के यूट्रस में एम्ब्रियो है उसका ब्लड लिया जा सकता है. और क्रोनिक विलाई, व्हाट इज अ क्रोनिक विलाई? इट इज अ काइंड ऑफ अ मेम्ब्रेन which surrounds the baby and protects it. तो ये होती है क्रोनिक विलाई. क्लियर है ये चीज? तो इनमें से 4 चीजों में से किसी का भी सैंपल लिया जा सकता है. इन तीनों में से कोई सैंपल ले सकते हैं, बट व्हाई डू दे टेक दैट सैंपल बच्चों? दे टेक दैट सैंपल टू जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक. ये सैंपल किसको भेजा जाता है? जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक को भेजा जाता है. बट फॉर व्हाट पर्पस? फॉर एनालिसिस और टेस्ट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ दैट चाइल्ड. इज इट क्लियर कि प्रोसीजर में क्या है? प्रोसीजर को अच्छे से समझना, बिकॉज वी विल बी डीलिंग विद द सेक्शन व्हिच प्रोहिबिट्स द प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एंड इन ओनली few exceptional cases such procedure can be opted by any of such people, otherwise it is clearly prohibited. Okay, and now the next definition that we have is 2J, which says prenatal diagnostic technique. Which techniques can be opted? It says technique includes both the procedure, that means 2I, and it also includes prenatal diagnostic test, that means 2K. So हमें ये तो पता है that what is procedure, but we don't know that what is test. टेस्ट में क्या होता है? prenatal diagnosis test. That means that before the child has taken birth, that is while the woman is pregnant, we are doing some test. लेकिन टेस्ट क्यों करते हैं? Whenever a female goes, a pregnant woman goes to doctor, why she does any test? क्यों टेस्ट किया जाता है? ये reasons हमें यहाँ पे दे रखे हैं. 2K says ultrasonography or analysis of amniotic fluids, chronic villi, blood or fluid. अच्छा, what is amniotic fluid? It is a sort of a liquid, okay, a transparent liquid which is around the baby from which the baby gets protein. ठीक है, बच्चा जो होता है उसके आसपास ये पूरा लिक्विड रहता है, तो इस लिक्विड से उसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पोषण मिलता है या प्रोटीन्स मिलते हैं. क्लियर चीज? तो इन सभी में से किसी भी चीज का टेस्ट हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, बट व्हाई डू दे हैव टू डू दिस टेस्ट? रीजन इज गिवन ओवर हियर. अच्छा, सी आई हैव रिटन द वर्ड PW, दैट मींस हियर प्रेग्नेंट वुमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी हो रहा है या ऐसा कोई टेस्ट हो रहा है, बिकॉज वी वांट टू टेस्ट एनी ऑफ दीज 5 थिंग्स. फर्स्ट इज जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. कहीं कोई जीन्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है. सेकेंड इज chromosomal abnormalities we know when things are not normal, things are abnormal. Chromosomes, we know that whenever you see a child taking birth,
तो we know that some traits he inherits from mother, some traits he inherits from the father. That is all because of the genes and chromosomes. Third is cognitive abnormalities. That is, cognitive means what? Related to mind. कुछ mind से related तो बच्चा आप कह सकते हो कि डिसेबल तो नहीं है या उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है. Fourth is hemoglobinopathy. It is related to your hemoglobin to check whether all the elements in the hemoglobin are up to the mark or not. किसी चीज की hemoglobin में deficiency तो नहीं है. Fifth is sex-linked diseases. Whether that child is suffering from any sex-linked disease. ऐसा तो नहीं, बच्चे को भी HIV positive हो रखा है in case the pregnant woman is HIV positive. So these are the 5 points. इनको detect करने के लिए अगर ऐसा कोई analysis या test किया जाता है, we call it as a prenatal diagnostic test. Clear? So that is your test. Procedure is not test. Procedure is different from your test. Okay. Now, the last definition that we have is what is sex selection. I will differentiate it with sex determination. Okay. Sex determination. As the word itself suggests, determination मतलब पता लगाना, to find it out whether the child in the mother's womb is a boy or a girl. पता लगाना, to determine. And 2O defines sex selection. मतलब selection का मतलब क्या हुआ कि you are given an option or you are trying to find ways by which you can ensure कि हमें एक particular sex का बच्चा चाहिए और वही आपको मिल जाता है. So here what are the things that are done to select a particular sex child? It says either a procedure is adopted, any technique is adopted, any test is adopted, anything is administered, or any type of drug is administered, or any type of prescription is given to the pregnant women so that they can ensure या फिर increase the probability. यहाँ पे chances increase हो जाते हैं कि जो women में embryo develop हो रहा है that will be of a particular sex only. For example, this is a couple, they want a boy. What do they want? They want a baby boy. So they go to the doctor and doctor administers them a particular type of a drug, ensuring that now the probabilities has increased that they will conceive a baby boy. Clear? So before pregnancy only they have gone to the doctor and selected the sex of the baby that they want, only baby boy, and for that they have adopted any of such measures, and both the things are prohibited. Okay, specifically sex selection is prohibited. Okay, further regulation of GCC, GC and GL. There are particular laws, or I can say provisions under this act which says that GCC, GC or GL, whenever they are working, whenever they are administrating their work, then in that case no GCC, GC or GL will conduct any prenatal diagnostic technique, employ or take service of person not possessing qualification. Section number 3 prohibits or puts a prohibition on GCC, GC and GL, saying that आप ऐसा कोई भी पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करोगे या ऐसे कोई भी पर्सन की सर्विसेज नहीं लोगे who is not qualified enough to assist you or give you the services. You are adopting any technique for prenatal diagnosis, then you have to make sure that the services that you are taking from the person or the person to whom you are employing for such purpose is qualified. Okay, unqualified person यहाँ नहीं चलेगा. And second prohibition that they have put over here is that no medical geneticist, no gynecologist, no pediatrician shall conduct or aid prenatal diagnostic technique at place other than the registered ones. We have seen many times when we go to laboratories or when we go to doctor or whenever you go to any such pediatrician or gynecologist, there in the premises you will find that they have a certificate hanging on the wall. Certificate hanging on the wall. That certificate is either as to the qualification they have achieved, or as to the registration of that place for the purpose of conducting of prenatal diagnostic technique. तो वहां पे उनके पास एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक परमिशन होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे आप प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक कर सकते हैं. अदरवाइज
अनरजिस्टर्ड प्लेस पे ऐसा कोई भी एक्ट नहीं होगा एज पर सेक्शन नंबर 3. ओके, moving on to the prohibitions that are given under section 3A and 3B. 3A says that there is a complete prohibition on sex selection. No person or no specialist or the team of specialists is going to select any sex. 3B says that there is a prohibition on selling of ultrasound machines, image machines और scanners जो capable हैं क्या बताने के लिए, sex of the fetus. मतलब sex determination नहीं, यहाँ पे sex determination के लिए बच्चों किसी भी टाइप की अल्ट्रासाउंड मशीन, कोई इमेज मशीन या कोई स्कैनर का क्या नहीं होगा, सेल नहीं होगा. क्लियर ना. तो चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ जीसीसी, जीसी एंड जीएल, उनके लिए कुछ स्पेशल रूल्स बना रखे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. तो जो टेक्निक थी जो हम 2I में अभी पढ़ के आए हैं, इससे रिलेटेड अब हमें समझना है कि इस चैप्टर में सेक्शन नंबर 4 से लेके 6 में कब ये टेक्निक अपनाई जा सकती है, कब नहीं. When this technique is allowed and when this technique is clearly prohibited. So section number 4 says regulation of prenatal diagnostic technique. Section number 4 will explain you that in which cases GCC, GC or GL shall not conduct any such technique. The general rule is that they will not conduct any technique except to detect these 6 things. If they have to detect these 6 things, they can do this technique. So what have to they detect? First is chromosomal abnormalities, genetic or metabolic disease, hemoglobinopathies, sex-linked genetic disease, cognitive abnormalities or other abnormalities specified by Central Supervisory Board. Central Supervisory Board we are going to study in section number 7, composition about it, meetings, disqualification, reappointment, everything. Okay, so can I say that these points are somewhere similar to the points that we studied in the definition of prenatal diagnostic test? 2K में अभी हम पढ़ के आए हैं. This is your definition. See 2K कि इन सारे पर्पस के लिए टेस्ट किया जा सकता है. The same pointers are given over here that GCC, GC और GL क्या कर सकते हैं, ये टेक्निक को अपना सकते हैं to find any of these defects. Clear? If I am clear, we will be moving forward. Further, they have said that whenever such technique is being adopted, जब भी इस टेक्निक को यूज किया जा रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, a qualified person, what? Only a qualified person is going to conduct the test. And if this qualified person is satisfied about these 5 reasons, only in that case the technique will be conducted. He has to write the reasons record the reasons that for the following reasons he has conducted the technique. And for what purpose the technique is allowed? If the pregnant woman is above the age of 35 years. We know that whenever it comes to pregnancy, then pregnancy in the women who are above the age of 30 years, they generally face many complications after 30 years. It is this is the reason that if the age of the women is above 35, they will go for prenatal diagnostic technique to ensure that there are no such complications. Second is if the woman is exposed to tetragonic agents. You see, tetragonic agents are some harsh drugs or harsh medicines which might have any side effect on that pregnant woman. Third is women or spouse of the women has the history of mental retardation or physical deformities. उस परिवार में आपके पूर्वजों को या फैमिली में क्या है, किसी को मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम है या फिजिकली डिफॉर्म है, देन टू अवॉइड द सेम थिंग इन देयर अपकमिंग जनरेशन और द बेबी दैट इज इन द feet that is in the uterus of the mother, what they can do, they can go for the technique and find that if baby is fine or he is also suffering from some retardation or deformities. Third is if the woman has undergone 2 or more abortion, fetal loss. जो करंट प्रेगनेंसी है उससे पहले 2 बार अगर fetal loss हुआ है, उसका abortion हुआ है, she has undergone abortion due to fetus loss, then in that case they will go for this technique and find out if everything is fine or not. And the fifth option is any other condition which might be specified by CSB, Central Supervisory Board. अगर और ऐसा कोई भी reason specify करती है, then in that case prenatal diagnostic
technique will be conducted. Now, whenever this technique is conducted, it will be conducted on a pregnant woman. Can this technique be conducted without the permission of the women? Without the consent of the women? Answer is no. In every case, the consent of the women has to be taken, and that too in writing. So section number 5 says written consent of the pregnant women plus prohibition on the communication of the sex of the fetus, because whoever is conducting prenatal diagnostic technique, they get to know about the sex of the fetus. Then they are not allowed to communicate either to that woman, her relatives, or any other person by any other means, either by word, sign or any other manner. नहीं बताना है किसी को भी until and unless they are authorized by the law or by the court. Okay, so whoever person is conducting the procedure, prenatal diagnostic procedure conduct कर रहा है, he is going to explain the women about the after and the side effects of such procedure, plus the written consent of that woman has to be obtained in her own language. And third is give her the copy of the written consent. So this is the procedure they have to follow before conducting the prenatal diagnostic procedure. अभी यहाँ पे हमने टेक्निक के बारे में पढ़ा था बच्चों, यहाँ पे हम प्रोसीजर के बारे में पढ़ रहे हैं. Is it clear? Okay, because technique includes what? Technique includes procedure plus test. Okay, now this we have completed. Okay, section number 6, that is prohibition on sex determination. Section number 3A में भी हमने sex selection के बारे में पढ़ा था, that is prohibition on sex selection. So here you have to read this with section number 6, which says that you are prohibited from determining the sex. You cannot find it out that the fetus in the mother's womb belongs to which sex. प्रोहिबिशन है किसके ऊपर? कोई भी पर्सन या जीसीसी, जीसी और जीएल के ऊपर भी. अनदर थिंग, अब हम सीधा सेक्शन नंबर 22 पे जंप कर चुके हैं. व्हाई? मैम सेक्शन नंबर 7 से लेके 21 तक कहां गया बच्चे? वो सब डील करता है आपके किससे? सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इन सब चीजों से डील करता है, और ये सारी अथॉरिटीज हम बाद में पढ़ेंगे. आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई हैव डिवाइडेड दिस सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज द कंप्लीट मेडिकल प्रोसीजर एंड सेकंड इज द कंप्लीट लीगल पार्ट, व्हिच इंक्लूड्स ऑल योर अथॉरिटीज, कॉम्पोजिशन, देयर पावर, देयर रिमूवल, ऑफेंसेस, cognizance, that all is a different part. Okay, so first I will be dealing all the portion related to your GCC, GC, GL, prenatal diagnostic procedure, technique and test. Is it clear? So section number 22, that is chapter number 7 का section 22 says prohibition on advertisement of prenatal determination of the sex. If the sex is determined, तो GCC, GC या GL या कोई क्लिनिक या लेबोरेटरी या ऐसी कोई भी प्लेस which is having ultrasound or image machine or scanner, they are prohibited from issuing, publishing or distributing or communicating what? Prenatal determination of sex or the sex selection before conception. Always remember, when you have seen the word sex selection, means it is selected before the woman conceives pregnancy. Am I clear? तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं होगा. किसका नहीं होगा? That the child belongs to this particular sex. So this is given under your section number 22, and if anyone contravenes this section, तो उसके लिए punishment है 3 years and 10,000 rupees fine. सेक्शन नंबर 23, जिसमें सबसे ज्यादा पनिशमेंट दे रखी है, और यही पनिशमेंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. सेक्शन नंबर 23 में वी हैव मेजर पनिशमेंट्स एंड यू नीड टू रिमेंबर दीज पनिशमेंट्स, क्योंकि यही आपके पिछले जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा है उसका पनिशमेंट बताती है. फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 23 सेज, मैम, इफ एनी मेडिकल जेनेटिसिस्ट, if any gynecologist, registered medical practitioner or owner of genetic clinic center or genetic counseling center, genetic clinic और genetic laboratory, इनमें से किसी ने भी इस एक्ट के कॉन्ट्री कोई भी एक्ट किया, then on first conviction they will be punished with 3 years and 10,000 rupees fine, and on subsequent conviction punishment is 5 years and 50,000 rupees fine. This is the first type of punishment on doing any act contradictory to this act. Okay, second point mentions about you is
name of the registered medical practitioner is reported. If medical practitioner has done any act which is opposed to his duties or which does not falls into his duty, he breaches his duty, and if the name of such registered medical practitioner is suggested or reported by the appropriate authority to the state medical council, उसका नाम किसने सजेस्ट किया, appropriate authority ने किया, किसको किया, state medical council को किया है, and if that registered medical practitioner is convicted guilty, अगर दोषी करार हो गया है तो फर्स्ट कन्विक्शन पे his name will be removed from the register of council for 5 years. You see, whichever if you see that there are many professional degrees, okay, so whoever does any professional course, he has to get enrolled to a particular authority. For example, we lawyers have done a professional course, that is LLB, then we get ourselves enrolled on state bar councils. Same way, अगर कोई MBBS करता है, they have to get themselves enrolled onto state medical registers, okay. तो यहाँ पे his name will be removed from the register, and if he is convicted for the second time, his name will be removed permanently. हमेशा के लिए उसका नाम वहां से हटा दिया जाएगा. Third type of punishment deals with if any person who aids, that is who helps, gives intentional aid to registered medical practitioner, GCC, GC, GL, your medical geneticist, gynecologist, for what purpose? Either for sex selection or prenatal diagnostic technique, then in that case, if conviction is for the first time, punishment is 3 years and 50,000 rupees fine, and for second time, it is 5 years and 1 lakh rupee fine. Is it clear? So these are the 3 types of punishment. ये थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है और हमारे जब सेशन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद you will realize that the questions that I have got also contains punishments or the questions from this part. And हो सकता है कि जो DPP आपके पास आएगी उसमें भी यहाँ से कुछ सवाल बन जाए. Okay, so be very vigilant while I'm teaching this act, because this act is very interesting. At the same time, there are many technicalities and many things which you need to recall or remember. Okay. सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है बच्चों? सेक्शन 24 कहता है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ PCPNDT. अगर ऐसी कोई टेक्निक हुई है, then court will presume something. Court shall presume something. What will court presume? That the pregnant woman was compelled to undergo such technique. What? You see, अगर हमने सीधा सीधा बोला है कि आप ऐसी टेक्निक को अपनाओगे ही नहीं, okay? रेगुलेशन ऑफ PCPNDT में हमने बोला कि दिस विल नॉट बी डन जनरल रूल, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस व्हेन सच टेक्निक कैन बी अडॉप्टेड, एंड इफ such technique is adopted, court shall presume that the woman was compelled to undergo that technique by whom? Either by husband or either by relative. And अगर इन्होंने उसे compel किया है, then what will be the punishment given to them, which is given under section 23 का subsection 3, that is ये वाली punishment बच्चों, ये वाली punishment. Okay? 25 says is penalty for contravention of the act, जहां पे punishment दे ही नहीं रखी है. There are many acts जहां पे कुछ चीजों के लिए punishment दे रखी है, but at the same time that act is not sufficient to provide punishment for that act itself. बहुत सारी चीजें हैं जहां पे PCPNDT में खुद में punishment नहीं दे रखी है, तो फिर क्या, तो उन्होंने जनरल एक सेक्शन नंबर 25 निकाला, and they said that in case if punishment is not given under this act, then do one thing, you will give punishment of 3 months or 1,000 rupees fine or 1,000 rupees fine. Clear? And in case it is a continuing contravention, daily basis पे उसका contravention हो रहा है, continue हो रहा है, then 500 rupees each day का fine भी वहां लगने वाला है. So this is your section number 25. 26 says offenses by companies. ये मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों that it is a universal section. What is it? It is a universal section which says that who will be prosecuted or who will be held guilty अगर any act which is said to be an offense under this act and it is done by the companies, तो आप सबसे पहले guilty किसको ठहराएंगे? Simple, the person who is in charge of the business when the offense was committed. And when can we say that this person will be given a chance to shed off his liability? Or when we can say that no offense has been committed by that person? If the person who is being held guilty proves that he had no knowledge about that thing or that thing
happened without his knowledge, or he had exercised complete due diligence to prevent that commission of offense. मेरी तरफ से पूरी मैंने कोशिश की थी कि ऐसा कोई भी ऑफेंस ना हो, या ये ऑफेंस तो मेरी जानकारी के बिना हुआ है, then in that case उस व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए दोषी करार नहीं किया जाएगा. Third point is that if in case now company is convicted, दोष सिद्धि हो गई है, then in that case यहां पर पनिशमेंट किसको दी जाएगी? ऑब्वियसली उस बिल्डिंग को उठा के वी कैन नॉट पुट बिहाइंड बार्स. हु विल बी हेल्ड लायबल ओवर हियर, और हु विल बी आस्क्ड टू पे द फाइन? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. दैट इज योर सेक्शन नंबर 26. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट and who can take the cognizance? If I talk about the nature of the offense under this act, it is cognizable, non-bailable and non-compoundable. And if I talk about cognizance, it is given under section number 28. It says cognizance can be taken either by metropolitan magistrate or by judicial magistrate first class. But the point to be noticed over here is that when the cognizance will be taken. ये रहा आपका point, when and by whom. Point number 1. Point number 2. When the cognizance will be taken, they say that the cognizance will be taken when the complaint has been filed either by the appropriate authority or any officer of the central government or state government who is authorized for this purpose. या तो आपकी appropriate authority जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं again, okay? We will be studying about it under section number 17. तो या तो वो appropriate authority वो कार्य complain करे, या फिर कोई भी person complain करे, लेकिन उससे पहले that person gives a notice of 15 days to appropriate authority showing his intention कि बाबा look, I am filing a complaint over here. I am filing a complaint over here under this PCPNDT Act. So let me know, will you file complaint, or if you do not file complaint, I am in full mood of filing the complaint. So he can go and file the complaint under this section. Clear? The person, the word that person is mentioned in this section, the word person includes social organization also. Okay. Now we come to the very important and very confusing and a very lengthy chapter, that is chapter number 4, Central Supervisory Board. क्या काम है इनका, क्यों बनाई जाती है ये? सेक्शन नंबर 16 में इसके मेजर फंक्शंस हम देखेंगे बच्चों, लेकिन सबसे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशन समझना है क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सेक्शन नंबर 17 टू सेक्शन नंबर 16A डील्स विद सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड, जहां पे 7 में कॉन्स्टिट्यूशन दिया, 8 में टर्म्स दिया, 9 में मीटिंग दिया, 14 में डिस्क्वालिफिकेशन, 15 में रीअपॉइंटमेंट, 16 में फंक्शन एंड 17A में बोला है दैट there will be state और union territory supervisory board. हर स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में स्टेट और यूटी सुपरवाइजरी बोर्ड होने वाला है. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कंपोजिशन और who constitutes central supervisory board. The word is central, that means central government. सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये बॉडी बनाई जाती है या बोर्ड बनाया जाता है, और इसका चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन वो पर्सन है who is the minister of Department of Family Welfare. So can I say yes or no? Comment section में स्टूडेंट्स जवाब देंगे yes or no. Can I say he is an ex officio member? He is an ex officio member. Whoever is the member or the minister of the ministry or Department of Family Welfare is automatically going to become the chairman of the Central Supervisory Board. बात खत्म, चेयरमैन वही होने वाला है. Point number 2, there will be a vice chairman. Who will be the vice chairman? The person who is the secretary of Government of India in charge of Department of Family Welfare. In charge of Department of Family Welfare, वो यहाँ पे क्या होने वाले हैं? Vice chairman होने वाले हैं. Then we will need 3 members. ये 3 members कहाँ से आएंगे? ये 3 members will be appointed by central government to represent. The members will be appointed by central government, but they will represent whom? They will represent first Ministry of Central Government in charge of Women and Child Development. तो इस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक क्या होगा? एक मेंबर होगा. दूसरा होगा डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज in legislative department in Ministry of Law and Justice. So another member is required to represent this department. Third is that the member will be required to represent Indian system of medicines and homeopathy. Okay, clear hai? See, when they represent these departments or these ministries, now what
do they do over here is that discussion में they are able to put forward all the things that are taking place under these departments or ministries or all the requirements or all the policies that they are framing. So that is the reason कि हमें एक एक member यहाँ पे represent करना है. Okay. Fourth point is there will be a Director General of Health Service of Central Government. 8th point, तो मैम 5, 6, 7 कहाँ गए? ये यहाँ पे है, but it requires more space. That's why I have clubbed them into next slide and I have adjusted points number 8 over here. Point number 8 कहता है, ma'am, we will require one officer who shall not be below the rank of the Joint Secretary in charge of Family Welfare. तो वो यहाँ पे automatically एक officer बनेंगे. We will require 10 members from the 5 categories. That means 2 from the each category. It will also be appointed by central government. वो दो लोग कौन सी 5 कैटेगरी से आएंगे बच्चों? पहला है मेडिकल जेनेटिसिस्ट, 2 मेडिकल जेनेटिसिस्ट लेंगे हम. 2 लेंगे गायनेकोलॉजिस्ट, हो सकता है ऑब्स्टेट्रिशियन हो सकता है, या वो एक्सपर्ट हो सकता है स्त्री रोग में या प्रस्तुति तंत्र में. अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट है तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में से हम 2 लोग उठा सकते हैं. फिर 2 पेडियाट्रिशियन होंगे हमारे पास, 2 सोशल साइंटिस्ट होंगे एंड 2 विल बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. सो इन 5 कैटेगरी से वी विल बी गेटिंग द 10 मेंबर्स ऑन द 10 एमिनेंट मेंबर्स. 6 पॉइंट सेज, मैम वी आर गोइंग टू गेट 3 विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की 3 सदस्य, महिला सदस्य होने वाले हैं, जिसमें से 2 विल कम फ्रॉम द हाउस ऑफ पीपल, 1 विल कम फ्रॉम द काउंसिल ऑफ स्टेट. And the last point is that we will require 4 members that will also be appointed by central government only, क्योंकि central supervisory board है, तो अपॉइंटमेंट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होने वाला है. तो ये जो 4 मेंबर आएंगे बच्चों, ये रोटेशन से आएंगे. ठीक है, रोटेशन से आते जाएंगे. कहां से आएंगे? स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आएंगे. अब ये रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन ऐसे होगा, 2 in alphabetical order and 2 in reverse order. मतलब 2-2 के रोटेशन में आएंगे. 2 आ जाएंगे आपके A B C D और 2 आ जाएंगे आपके Z Y X. ऐसे आएंगे. कैसे? मतलब 2 असम से आ जाएंगे पहले. तो मतलब आपको स्टेट का नेम देखना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरी का नेम देखना पड़ेगा, अल्फाबेटिकल वाइज लगाना पड़ेगा. तो 2 आएंगे आपके कहां से? पहले आ जाएंगे आपके किसमें से? अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में से. और दूसरी बार रिवर्स हो जाएगा. दूसरी बार क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा. ओके, एंड दिस विल ऑल्सो बी रोटेटेड. So this was about the composition of the Central Supervisory Board. Now we will come on to the meeting of the board. मिलना कितना है? यहाँ पे time duration important रहता है students. That can be asked into the preliminary. That is once in 6 months. Once in 6 months. But who will decide their time, place, procedure, quorum, meeting? Who is going to decide? Will be decided by the board. Board खुद अपना सब कुछ decide करने वाला है. And they said that no proceeding that has taken place in the board will be invalidated. वो आप ये नहीं कह सकते ये इनवैलिड है इन 3 ग्राउंड्स पर. पहला ग्राउंड है कि मैम जो बोर्ड बना था उसमें कोई वैकेंसी रह गई थी, या बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है. तो डिफेक्ट रहने दीजिए, उसके बाद भी इफ द बोर्ड हैज मेड एनी डिसीजन यू कैन नॉट इनवैलिडेट द डिसीजन. सेकंड ग्राउंड इज दैट देयर वाज अ डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड. एक हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन गठन में, दूसरा हो रहा है अपॉइंटमेंट नियुक्ति में डिफेक्ट है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड द थर्ड इज दैट द इरेगुलरिटी वाज इन द प्रोसीजर, जिससे कि केस के मेरिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस even if irregularity took place in the procedure conducted by the board. No matter, still the proceeding that took place in the board will remain valid. Okay, section number 11 says that जब ये बोर्ड है ना बच्चों, ये बोर्ड, इस बोर्ड में भले ही बहुत लोग हैं but still they need associates. Who are associates? Associates are the people who assist. We have seen many legal associates are required these days. So the board requires associates who can assist and give them the advice. तो ये होते हैं temporary. They are only for time being. They are not permanent. They will be selected by your board itself. There is a very important right, positive right and a negative right regarding these associations or the associates. First is they shall have right to take part in the discussion. अरे आपने बुलाया ही उनको assistance के लिए है, advice के लिए है, so let them hear the discussion also. And second point is that they shall not have right to vote
or right to be the member of that board. They are not considered to be the member, they are only associates. तो जब member नहीं हो तो vote करने का भी you do not have right. Section number 12. अब हमारा बोर्ड हो गया, बोर्ड को असिस्ट करने के लिए हम पहले बोर्ड हो गया, बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा उसके मेंबर्स कौन कौन है. वंस वी आर डन विद द बोर्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मेंबर, वी हैव कम टू द एसोसिएट्स व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 11. एसोसिएट्स भी सिलेक्ट हो गए हैं अंडर सेक्शन 12. नाउ वी वांट द एम्प्लॉयज एंड द ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड. यहाँ पे अधिकारी होने चाहिए, कर्मचारी होने चाहिए, हु इज गोइंग टू डू द वर्क. सो दीज ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज आर गोइंग टू डू द वर्क. लेकिन ये ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को अपॉइंट कौन करेगा? इट विल बी डन बाय बोर्ड, लेकिन ओनली ऑन द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट हु कॉन्स्टिट्यूटेड द बोर्ड. सो हियर द से ऑफ द बोर्ड विल प्रिवेल. ओके, नेक्स्ट section number 13, which says that if any order or any instrument is passed by the board, then what is the proof कि authentic है? सिंपल सा चीज है कि अगर बोर्ड के ऊपर चेयरमैन का साइन है एंड इंस्ट्रूमेंट पे मेंबर सेक्रेटरी का साइन है, we will presume that this order or instrument is authenticated. There will be no question that it is fake or forged. Okay. Section number 14 says what will be the ground of disqualification for the member of Central Supervisory Board. There are 6 grounds for disqualification. First is if the members are convicted and sentenced for moral turpitude. Second is if they are insolvent. Third is if they are declared to be of unsound mind by the court of competent jurisdiction. Fourth is that they are removed or dismissed by the service of the government. Fifth is if the financial interest of the board will be affected. If they do not disqualify this member, the financial interest of the board will be affected, they will disqualify him. And fifth is if they have promoted pre-natal diagnostic technique for sex selection or sex determination. भैया आपको ये कार्य ही नहीं करना है, ये कार्य एक्ट में प्रतिबंध लगा रखा है, prohibited है, still you people are doing this act, you will be disqualified. Clear? This is your section number 14. Now we will come to very major part, that is appropriate authority and advisory committee. Appropriate authority का अभी हमने रोल पढ़ा था. क्या पढ़ा था? रोल पढ़ा था. जीसीसी, जीसी एंड जीएल के केस में हमने appropriate authority के बारे में पढ़ा था. Now what are the functions of this appropriate authority and who appoints this appropriate authority? We will understand. Appropriate authority is given under your section number 17, where clause number 1 to 4 deals with appropriate authority and clause 5 to 9 deals with advisory authority. Appropriate authority बच्चों पहले आती है और उसको असिस्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए एडवाइजरी अथॉरिटी आती है. ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड को एडवाइस और असिस्ट करने के लिए कौन आता है बच्चों? वहां पे आता है हमारा, कौन आता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ. वहां पे आते हैं एसोसिएट्स. क्लियर? एंड उनके नीचे उनके एम्प्लॉइज एंड ऑफिसर्स भी होते हैं. Appropriate authority is appointed by central government in union territories and state government कहां करती है? स्टेट के लिए. So appropriate authority आपकी central level पर भी होती है, appropriate authority आपके state level पे, I mean to say union territory में भी होती है, और कहां पे होती है? हमारे state authority भी होती है. Okay? इसका composition क्या होगा? There will be 3 members where first will be the chairman whose rank is above the joint director of health and family welfare. Second is a eminent woman who is the representative of women organization. And third is the officer of the law department either of the state or union territory. तो ये 3 मेंबर से बनके बनती है हमारी appropriate authority. Appropriate authority में आगे हम पढ़ेंगे that who gives the registration or who gives the certificate to these GCC, GC और GL. तो appropriate authority के बारे में अच्छे से सुनते जाना. Okay? In case any vacancy is seen or any vacancy occurs, then it has to be filled within 3 months from the date of occurrence. 17A ये कहता है कि appropriate authority की powers क्या होगी? वही powers है like किसी person को summon करना, documents को produce करना या फिर search warrant issue करना. Okay? Now we will understand about advisory committee. यहाँ पे किसके बारे में पढ़ा हमने? Appropriate authority. अभी हम पढ़ने वाले advisory committee. Advisory committee है क्यों? Advisory committee है किसके लिए? To aid and advise the
एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को एड एंड एडवाइस करने के लिए अपॉइंट किसके द्वारा होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज अब ये लॉजिक लगा सकते हैं ना हम, क्योंकि हमने बोला कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड या तो यूनियन टेरिटरी में होगी या सुपरवाइजरी बोर्ड या तो यूनियन टेरिटरी में होगी या स्टेट में होगी। यूनियन टेरिटरी में होगी तो उसके लिए उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ओके, आई मीन टू से एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वापस से सुनो स्टूडेंट्स, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी दो जगह होगी, एक तो यूनियन टेरिटरी में होगी, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट में होगी। अगर यूनियन टेरिटरी में होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अगर स्टेट में होता है तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है, उसका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करने वाला है। तो वही बात यहां पे हो गई ना। अब यूनियन टेरिटरी की अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अगर एडवाइजरी कमिटी चाहिए, देन हु इज गोइंग टू अपॉइंट द एडवाइजरी कमिटी फॉर such appropriate authority of union territory? Central government. That is why you see central government. And if the appropriate authority of the state requires any advisory committee, then who is going to appoint the state committee? State government is going to appoint the state advisory committee. What is the composition? It is going to have 3 medical experts, which can be from gynecologist, obstetrician, pediatrician, or medical geneticist. One will be the legal expert like you and me. Third will be one officer to represent department dealing with information and publicity of state government and union territory. And fourth will be, there will be one social worker out of 3 eminent social workers. So sorry, 3 eminent social worker out of which one has to be a woman. Okay. Here we are done with the advisory committee. Now we will deal with registration of GCC, GC and GL. बाबा हमने ये तो समझ लिया कि इनका काम क्या है, इनके ऊपर रेगुलेशंस क्या हैं, when they are prohibited, what they act can they do, what they cannot do. Now let us understand that what is the provision related to registration. कौन से सेक्शन में होगा रजिस्ट्रेशन, कब होगा, कब कैंसिल हो जाएगा. Section number 18 deals with the registration which says you have to file application to the appropriate authority. Appropriate authority कौन से सेक्शन में पढ़ा बच्चों, अभी पढ़ा ना, सेक्शन नंबर 7 में हमने, सॉरी 17 में तो हमने सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड पढ़ लिया था. तो here appropriate authority को एप्लीकेशन देना होगा. अगर ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट एज अ जीसीसी, जीसी या जीएल रन कर रहा है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, देन एज सून एज दिस act comes into force or this act commences, such GCC, GC or GL has to within 60 days from the commencement of this act get themselves registered. Section 19 says the grant of the certificate of registration. Who grants the certificate? Appropriate authority. जैसे we people get the certificate, Bar Council of India मिलता है ना हमको, वैसे के वैसे certificate of registration इनको कौन देगा, appropriate authority देगा. But appropriate authority has power either to grant the certificate after inquiry, proper inquiry, or they also have the power to reject the certificate in case they find that GCC, GC or GL has done any act in contrary to this act. PCPNDT act के contravention में कोई भी act किया या they have not complied with all the provisions of this act, they are going to immediately reject the application of such GCC, GC or GL. GCC, GC or GL has to display the certificate in the conspicuous part of the building. We have seen, we go to the labs, they have a certificate hanging on the wall. That means उनका वो institution, वो जगह, वो clinic, वो lab, वो center क्या है बच्चों, registered है. Okay. Section number 20 that deals with the cancellation or suspension of the registration. When you can cancel or suspend the registration? First is जो देगा वही लेगा. That is, the certificate was granted by appropriate authority. Only appropriate authority has the power to withdraw or suspend or cancel the registration. When they will cancel? First is on receiving the complaint या फिर suo motu on their own knowledge. And when this is the situation, then they will give a show cause notice to such clinic, center or laboratory, है ना, कारण बताओ नोटिस देंगे. लेकिन there can be one situation when they can suspend, not cancel, okay? When they can suspend the registration without notice. When can that happen? When that is necessary for a public interest. Public interest के लिए जरूरी है, बिना किसी नोटिस, कारण बताओ नोटिस के हम यहाँ पे इस registration को cancel कर देंगे. Why? Why is it cancelled? For the breach of the provisions of this act. ये वाले situation, okay? ये वाले situation में without notice में ये होना चाहिए that it should be against the public interest. Section 22 says
that in case GCC, GC or GL under section number 20 are aggrieved due to the decision of supervisory board, then where will the appeal lie? Appeal will lie to central government agar order has been passed by central appropriate authority, and the appeal will lie to state government if the order has been passed by state appropriate authority. Clear? And the last point that we have is miscellaneous, section number 29 to 34. मिसलेनियस है, लेकिन सेक्शन नंबर 29 ही सबसे महत्वपूर्ण है, which says maintaining of the records. इस पूरे एक्ट में we have studied so much about the consent letter, about the documentations, about the registrations. Then till what time period these records or these consent letters or any such criminal proceeding documents have to be preserved? Section number 29 says that there are two types of time limits. First, if the document or the record is any chart, form, report or consent letter, then you have to preserve it at least for 2 years as prescribed in your rules. In case if the records relate to your any criminal proceeding against GCC, GC और GL, तो इन सारे रिकॉर्ड्स को कितने टाइम तक के लिए आपको प्रिजर्व करना है या मेंटेन करके रखना है? टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग. जब तक केस खत्म नहीं हो जाता तब तक सारे डॉक्यूमेंट्स हम संभाल के रखते हैं. इन दैट केस यहां पर भी सेम है, दैट द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रिजर्व टिल द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ, एंड ऑल दीज रिकॉर्ड्स आर ओपन और अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. ओके, एंड लास्ट सेक्शन, लास्ट प्रोविजन दैट वी हैव इज पावर्स. बहुत सारे पावर्स पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे 4 सेक्शन में कुछ अथॉरिटीज को पावर दिया गया है. फर्स्ट वी विल स्टडी सेक्शन नंबर 30 which says that when the power as to the search, seizure और record has to be made. पावर किससे रिलेटेड बनाना है बच्चों? सर्च, सीजर और रिकॉर्ड. देन हु इज गोइंग टू मेक द पावर्स? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. हु इज गोइंग टू मेक? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 30 में पावर है. When we talk about other 3 sections, that is 31A, 32 and 33, who has the power? Your central government has the power. Section number 31 says that in case any difficulty is to be removed under PCPNDT Act Amendment 2002, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. 32 में बोला रूल मेकिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. 33 में बोला रेगुलेशन मेकिंग पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वन ऑफ द माइनर लॉज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशन. बच्चों रूल्स क्या होते हैं? रूल्स आपकी गाइडलाइंस होती हैं. ओके, गाइडलाइंस. एंड रेगुलेशंस आपके क्या होते हैं? दे आर डायरेक्शंस और डायरेक्टिव्स, दिशा निर्देश होती है. ओके, नाउ सी 32 सेज टू मेक रूल्स. तो ये रूल्स में क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं? इट कैन इंक्लूड रूल्स एज टू क्वालिफिकेशन ऑफ जीसीसी, जीसी और जीएल, कंडक्ट एनी सोनोग्राफी, सोनोग्राफी कैसे कंडक्ट होनी है, कंसेंट लेटर का फॉर्म क्या होने वाला है जो कि विमेन दे रही है, प्रेग्नेंट विमेन, कौन से सेक्शन नंबर 5 में, प्रोसीजर क्या रहेगा सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड का, फॉर्म ऑफ द सर्टिफिकेट okay which is granted to your GCC, GC or GL at the time of registration, manner of the seizure, term and condition of the advisory committee, any facility or equipments or standards that are adopted by GCC, GC or GL and the period to preserve the record जो हमने पढ़ा section number 29 में. When we come to section number 33, then all the decisions or all the regulations related to your board, चाहे उसकी मीटिंग हो गई, प्लेस हो गया है, कोरम हो गया है या टाइम हो गया है, that will be decided by central government. Okay, so I hope ये एक रैपिड रिविजन PCPNDT का आपको जरूर पसंद आया है. एंड अब हम आगे बढ़ेंगे जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या बच्चों? अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आपको डील करने ही करने हैं और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक बार ये सेशन ओवर हो जाए, गो टू द PW ऐप एंड डाउनलोड और एनरोल योरसेल्फ टू द नीति बैच जहां पे आपको कुछ DPPs मिलने वाली है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज बिफोर अस इज अंडर PCPNDT एक्ट हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड. दिस मीन्स दैट ये कहां से आया है? कॉम्पोजिशन से आया है. कहां से आया है? Composition, that is section number 7. They have asked that who is the president. Can I say इन्होंने पूछा है कि मैम
चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन कौन होगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर. Let's read other three options also. Information and Broadcasting Minister, Minister of Human Resource Development, or Home Minister. None of these three, only option D is correct, that is Minister in charge of the Ministry of Family Welfare. Second question, this is second, okay, you can mark it as second, or I'll let it be as it is typed. Okay, next, under PCPNDT Act, if any GCC, GC or GL advertises about prenatal determination of sex, then it is punished with how much sentence? Advertisement पे ban लगाए बच्चों, किस पे ban लगाया है? Advertisement पे ban लगाया. Is it 5 year and 10,000, 3 year and 10,000, 7 years and 10,000, or 10 years and 10,000? Right answer is 3 years and 10,000. Okay. Next. If any registered medical practitioner, that is doctor, contravenes second time and subsequently any of the provision of PCPNDT Act, shall be punishable with how much punishment? बोला है registered medical practitioner means it is from your section number 23. Is it 5 years and 10,000, 5 years and 20,000, 5 years and 30,000, or 5 years and 50,000 rupees fine? So when we see section number 23, it deals with the three types of punishment, and the right answer is D, that is 5 years imprisonment and 50,000 rupees fine. It is saying that medical practitioner has contravened second time. Medical practitioner has contravened second time. We will go, I think it is from your section number 23 ka subsection 1. Let's go back to our slides and see. Okay, we have it here. Punishment. ज़्यादा आगे आ गए हम. Okay, no problem. Yes, it is here. Medical geneticist, gynecologist, registered medical practitioner contravenes this act. Okay, do not get confused. It is under section number 23, subsection 1. Second time पूछा है, first time नहीं पूछा उन्होंने. Second time पूछा. That's why we have marked 5 years and 50,000 rupees fine. Section number 2 of PCPNDT Act defines GCC, GC, GL or all of the above. We know section number 2 में बहुत सारी definition और तीनों को ही हमें define करके दे रखा है. It is all of the above. What is the nature of crime under PCPNDT Act? Cognizable, non-bailable, non-compoundable, cognizable, and bailable and compoundable. Till that time, students can let me know in the chat box, live chat box, that ये कौन से section से question आया है. Cognizable, non-bailable, non-compoundable, cognizable, bailable, compoundable, cognizable, non-bailable and non-compoundable, non-cognizable, bailable and compoundable. Right answer is cognizable, non-bailable and non-compoundable. Okay. Next, who is empowered to make rules under PCPNDT Act? That is the last section. Second last section. क्योंकि last section तो किससे relate करता है बच्चों? Regulation से relate करता है. Regulation से relate करता है. Clear? So who has the power? Central government has the power. Okay, clear? Next question. When was PCPNDT Act amended? मतलब 2003 वाले की बात कर रहे हैं. 14 February. Easy to remember, very easy to remember. I guess 14 February सबको ही अच्छे से याद हो सकती है, right? Under which section of PCPNDT Act regulation of genetic counseling center, genetic laboratory, genetic clinic is provided? कौन से सेक्शन में इन सब का? अच्छा, रेगुलेशन पूछा है इन्होंने, नॉट डेफिनेशन. इन्होंने रेगुलेशन पूछा है. ये कहां पे है? 1, 2, 3, 4 सेक्शन नंबर 3, जिसमें इन्होंने क्या बोला है कि कोई भी जीसीसी, कोई भी जीसी या कोई भी जीएल, व्हाट आर नॉट दे गोइंग टू डू, व्हाट दे कैन नॉट डू, दे कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन और टेक सर्विस ऑफ एनी पर्सन फॉर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक. ऐसे पर्सन को एम्प्लॉय नहीं करेंगे, उसकी सर्विस नहीं लेंगे हु इज नॉट क्वालिफाइड. एंड सेकेंड उन्होंने बोला है देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ एनी अल्ट्रासाउंड मशीन और एनी इमेज मशीन और स्कैनर which helps in sex determination. Okay, last question before us is under section 3A of PCPNDT Act, it is provided that no person shall make dash on an embryo or tissue of any man or women by himself or by any other person. 3A किससे पढ़ा था? 3A को अच्छा मैंने सेक्शन नंबर 6 के साथ बोला था कि आपको पढ़ना है.
because section number 3A prohibits sex selection. Clear है? And section number 6 prohibits sex determination. Am I clear? Okay. So I hope you all have enjoyed this session और आपको ये जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट था काफी पसंद आया होगा. And if this is the first time you are watching this session, I will request you to once again watch this session. And since UPPCSJ preliminary exam is like we can say कि एकदम सर पे आ चुका है ना, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, बहुत ज्यादा पास भी नहीं, तो एकदम सर पे आ चुका है, तो एक बार आप एग्जाम में जाने से पहले इस सेशन को वापस 2x स्पीड पे जरूर देखना. एंड आई कैन बी वेरी श्योर कि आपको इस सेशन के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. एंड even if you rely on this session and you do not feel like studying direct, that will be sufficient. You can collect the PDF by clicking the link that is given in the description box, and you can go to the PW app, enroll yourself for Neeti batch, and from there you can also watch the sessions, plus you can download the PDF. I guess the PDF will be getting downloaded, कुछ दिनों में ये डाउनलोड हो जाएगी सारे स्टूडेंट्स द्वारा. सो आई विश कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और ऐसे ही सारे माइनर लॉस को अच्छे से पढ़ते हुए जाएंगे. आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, दैट इज मोर देन इनफ फॉर जीके पार्ट. तो देखते हैं कि अगले सेशन में हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे और कैसा रहता है यूपीपीसीएसजे का इस बार का पेपर, या क्या लेवल रहता है इस पेपर का. So that was all from my side in this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.